Hello students, today we discuss a new topic, basic conditions of learning maturation, which is brought from learning and teaching subjects. Let us discuss about this topic in detail. Meaning of the maturation. Maturation is the process of becoming mature, the emergence of individual and behavior characteristics through growth process over time. It can also refers to any of the following: fetal development, physical maturation of any biological life form. We discussed what is biological life. Biological life means it's totally the natural science, including the physical development and evolution. It means fully development, you're fully developed physically or full grown. Otherwise, we may call having reached the most advanced stage of process. Second, maturation is the completion of growth and development within the organism, the unfolding of an individual's inherent traits or potentials. What is traits? A distinguished quality or characteristics, typically one belonging to a person. Otherwise, it is a characteristics which is genetically determined, जिसको हम लोग लक्षण बोलते हैं या खासियत बोलते हैं. मतलब ये इंडिविजुअल वाइज अलग अलग होता है, अलग अलग ट्रेट हम लोग को हैंडल करते हैं. देन पोटेंशियल, having or showing the capacity to develop into something in the future. जिस खासियत या जिस क्षमता है जिसको हम लोग को बाद में पता चलता है जो हम लोग के पास कितना पोटेंशियल है. नेक्स्ट we discussed about the definition of the maturation. Korgman defines maturation as aging. Aging means it defines overall physical growth and mental development. Aging, it indicates your age. Second, Baldwin. Maturation is an increase in competency and adaptability. परिपक्वता, योग्यता और अनुकूलन क्षमता में वृद्धि है. इसमें हम लोग कभी व्हाट इज कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी इट मीन्स ए कैपेबल ऑफ बीइंग अडॉप्टेड, दैट वी कॉल्ड अडप्टेबिलिटी. एंड कॉम्पिटेंसी द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और efficiently, which efficiently or successfully we enhanced, that is called competency. Third, maturation means that children are able to do at certain stages of development certain tasks that they could not do previously. Wolf and Wolf का definition है. It means you will not do the task or work that you have done and will try to do it later. परिपक्वता का मतलब ये है कि बच्चे विकास के कुछ चरणों में कुछ कार्य करने में सक्षम है जो वो पहले नहीं कर सकते थे. मतलब जो कि काम जिसमें जो काम को हम लोग कर नहीं पाते हैं, जो पहले से कर नहीं पाते थे, जब हम लोग को नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, कुछ सीख पाते हैं, तब हम वो काम को आराम से कर पाने को प्रयास करते हैं. गेजल. Maturation is the net sum of the gene effects operating in a self-limited life cycle. In limited period of time, you do some of effective efforts or some effective dedication to make your life progressive and purposeful. It means we may called it means we determine our aims and achievements without help of others. We achieve something in our life. Then heredity and maturation. Maturation is not the same as learning, since changes due to maturation and changes are determined by heredity. What is heredity? जिसको हम लोग बोलते हैं अनुवंशिकता. The passing on the physical or mental characteristics genetical from one generation to another. जब जनरेशन टू जनरेशन वैरी करता है उसको अनुवंशिकता बोलते हैं. जैसे फोर फादर, फोर एंसिस्टर्स हम लोग बोलते हैं, कमिंग जनरेशन, फोर एंसिस्टर्स जिस बात होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर हेरिडिटी. Then, different species of animals rates of maturation as a result of heredity. A child may progress somewhat faster or slower than this sequence and still be considered normal. All things are related to our heredity and environmental factors.
When we said about heredity, then it comes around our life, that is called environment, the surroundings or conditions in which a person or animals, plants, lives are operates. जो हम लोग आस पास में जीवन रखने जैसा प्राणी है, प्लांट है, पौधा है, पेड़ है, उसका जीवन हम लोग के ऊपर उनको उनका प्रभाव रहता है, और हम लोग के साथ साथ परिवेश के साथ साथ उन ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग को एनवायरनमेंट बोलते हैं। आज हम लोग को डेफिनेशन, हेरेडिटी और मीनिंग के बारे में डिस्कशन किए। हम लोग कोशिश करेंगे उसका आगे में इसका परिभाषाएं, विशेषता को लेके आए। आज मैचुरेशन का बारे में, जिसको परिपक्वता बोलते हैं, ये टोटल बेस करता है बच्चों का प्रोग्रेस के ऊपर में, उसका विकास के ऊपर में, और ड्यू टू एज के हिसाब से। अब जब वो फिजिकल में जब वो डेवलपमेंट होता है, कभी कभार मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, और कभी कभार मेंटल डेवलपमेंट होता है और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। तब जब ये दो चीज़ को हम लोग मेंटेन करते हैं, अगर जिसके पास फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट बोथ रहता है, तो हम लोग उसमें बोलते हैं मैच्योरिटी या मैच्योर्ड पर्सन बोलते हैं। तो ये मैच्योरिटी डिपेंड करता है बच्चों लोग को उसका कैपेबिलिटी, क्षमता तो एक बात होता है, उसके साथ साथ उनके ऊपर नॉलेज भी ज़्यादा उनको ज़रूरत होता है। नॉलेज, ज्ञान भी सीखना, जितना आप ज्ञान और सीखना आप एक्वायर कर पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, तो आपका मैच्योरेशन जो बोलते हैं मैच्योरिटी लेवल डेवलप होता है। आज हम लोग इतना डिस्कशन किए, कल कोशिश करेंगे और आगे पढ़ाने के लिए। थैंक यू।